Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 1 of chapter 8 Gravitation of class 11. In this part, I am going to discuss Kepler's laws of planetary motion. केप्लर का ग्रहीय गति के नियम. Kepler deduced three important laws regarding the motion of planets around the sun. केप्लर ने ग्रहों की गति से, सूर्य के गिर्द ग्रहों की गति से संबंधित 3 इम्पॉर्टेंट लॉज दिए, जिनमें से फर्स्ट लॉ है एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, सन बीइंग एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स, दैट इलिप्टिकल ऑर्बिट. केप्लर का पहला नियम है कि प्रत्येक ग्रह, प्लैनेट सूर्य के अराउंड, सूर्य के गिर्द दीर्घवृत्तीय पथ पर परिक्रमा करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमा करता है, दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिक्रमा करता है सूर्य के गिर्द, तथा सूर्य की स्थिति उस दीर्घवृत्तीय पथ के दो फोकाई में से किसी एक फोकस पर होती है. इलिप्स में 2 फोकस होता है. फर्स्ट फोकस एक सेंटर के लेफ्ट, दूसरा इलिप्स के सेंटर के राइट. तो देयर आर 2 फोकाई ऑफ एन इलिप्स. राइट डाउन फर्स्ट लॉ, केप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. Kepler's first law, and this law is also called law of orbits or law of elliptical orbits. First law, Kepler's first law, which is called law of orbits or law of elliptical orbits. Now write down every planet revolves around the sun in an elliptical orbit, not circular but elliptical. दीर्घवृत्तीय ऑर्बिट कक्ष में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई प्लैनेट सूर्य के अबाउट रिवॉल्व करता है, न कि सर्कुलर ऑर्बिट में, जैसा कि केप्लर के पहले कोपरनिकस साहब ने कहा था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ, सन के चारों ओर वृत्तीय पथ पर, सर्कुलर पाथ पर या सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. तो एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन elliptical orbit. Every planet revolves around the sun in an elliptical orbit. और सन का जो पोजीशन होगा, सन सेमीकोलन देकर के, सन का जो पोजीशन होगा, सन बीइंग एट वन ऑफ द फोकाई, फोकस का प्लूरल फोकाई, क्योंकि इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, एक सेंटर के लेफ्ट में, दूसरा सेंटर के राइट में. फोकाई ऑफ द इलिप्स. इलिप्स मीन्स दैट इलिप्टिकल ऑर्बिट in which a planet is revolving around the sun. Foci of the ellipse. And Kepler's first law is called, also known as law of orbits. इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है. अब इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ को डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. ये देखिए, ये इलिप्स है,
जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, जो कि सन के चारों तरफ किसी प्लैनेट का पाथ होगा। ये सन, ये फोकस है, इलिप्स का यहाँ सेंटर, लेकिन सन का जो सिचुएशन है, पोजीशन है, वह उसके एक फोकस पर है। ये F1 है, ये दूसरा फोकस F2 है, ये सेंटर है वो इलिप्स का। लेकिन सन का सिचुएशन, ये का पोजीशन किसी एक फोकस पर होगा, आइदर F1 और ऑन F2। और प्लैनेट यहाँ पर है, प्लैनेट यहाँ, और ये रिवॉल्व कर रहा है प्लैनेट, मान लिया v वेलोसिटी से इसके अराउंड, सन के अराउंड। सन का पोजीशन यहाँ पर है, फोकस पर, किसी एक फोकस पर। तो सपोज करते हैं लेफ्ट फोकस पर सन है, और सन से ज्वाइन करने वाला प्लैनेट का लाइन P2S ये है। अब सन इलिप्टिकल ऑर्बिट में यहाँ दिखलाए हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसको यहाँ दिखाया गया है। v स्पीड से कोई प्लैनेट P यहाँ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, और सन का पोजीशन किसी एक फोकस पर है, इलिप्स का लेफ्ट फोकस पर सन का पोजीशन है। AC द पोजीशन ऑफ द सन, P इज द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। P पोजीशन प्लैनेट का है, ये प्लैनेट है, और S सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह सन का पोजीशन है, जो कि इलिप्स के एक फोकस पर है, F1 पर। ये F1 इज द पोजीशन ऑफ द सन, विच इज वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्स। और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इलिप्स है, और इलिप्टिकल ऑर्बिट ये फिगर 1 रिप्रेजेंट किया गया। तो कोपरनिकस साहब के अपोजिट केपलर ने, हालांकि कोपरनिकस का जो कहना था कि कोई प्लैनेट सन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, केपलर साहब का भी वही कहना था कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। लेकिन कोपरनिकस साहब का यह कहना था कि प्रत्येक प्लैनेट, एवरी प्लैनेट सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। जबकि केपलर साहब ने कहा कि एवरी प्लैनेट सन के अराउंड तो रिवॉल्व जरूर करता है, लेकिन उसका जो पथ होगा, ऑर्बिट होगा, वह सर्कुलर न होकर इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। And this law is called Kepler's first law is called law of orbits. Now Kepler's second law, number 2, Kepler's second law. और इसे कहा जाता है केपलर सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज, एरिया का, क्षेत्रफल का नियम। और सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, द लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट P टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। The line joining any planet to the sun, that is SP, sweeps out equal areas in equal intervals of time. किसी प्लेनेट को, ग्रह को सन से ज्वाइन करने वाला लाइन समान समय अंतराल में, इक्वल टाइम इंटरवल में, समान एरिया, समान क्षेत्रफल कवर करता है। और इसे अदर वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी मीन्स, अब इक्वल टाइम इंटरवल में कोई एवरी प्लैनेट इक्वल एरिया कवर करता है, इक्वल एरियाज कवर करता है। तो अगर dt स्मॉल टाइम है, इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम, उसमें एरिया कवर करता है अगर प्लैनेट dA, तो dA बाई dt एरियल वेलोसिटी होगा, वह कांस्टेंट होगा। क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल dt में area covered by a planet is same, therefore aerial velocity of the planet remains the same. And this is mathematical form of Kepler's second law. And dA by dt, that is dA by dt, rate of change of area, dA by dt, where dA is the area formed. Area sweeps out by a planet in a small time interval, very small time interval, infinitely a small time interval, dt. So
dA by dt is the rate of change of area. dA by dt remains constant. और उसको मैथमेटिकली लिखा जाता है dA by dt इक्वल टू L by 2m. L is the angular momentum of the planet around the sun, m mass of the planet, and it is L by m is constant since there is central force. Planet moves under the central force around the sun, and for gravitational force is an example of central force. Central force means the force which acts along the line joining two masses towards a fixed point. Here fixed point is sun, around which a planet is evolving in an elliptical orbit. Therefore, for a motion of the planet around the sun is under the central force. Therefore, motion of an object, here planet, under the central force, angular momentum of the planet remains constant. Therefore, dA by dt is equal to L by 2m, that is angular momentum upon 2 into mass of the planet. And since L for a central force is constant, m is also constant, 2 factor is constant. Therefore, dA by dt is constant. This is mathematical form of Kepler's second law of planetary motion. And Kepler's second law of planetary motion comes from the observation that any planet which is revolving farther to the sun moves slowly in comparison to closure 1. तो इस ऑब्जर्वेशन के साथ केपलर सेकेंड लॉ ऑब्टेन किया गया कि कोई प्लैनेट अगर सन के इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन से अधिक दूरी पर रिवॉल्व करता है, सन से दूरी जब उसकी अधिक होती है, उस समय उस प्लैनेट का एंगुलर स्पीड कम हो जाता है कंपेरिजन टू जब वह प्लैनेट सन के क्लोजर होता है. तो इस ऑब्जर्वेशन से केपलर का सेकेंड लॉ ऑब्टेन किया गया. नाउ राइट डाउन केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. द लाइन ज्वाइनिंग any planet to the sun swept out मैंने कवर करना, swept out equal areas in equal interval of times, equal time intervals. I am repeating again, the line joining any planet to the sun swept out equal areas in equal time intervals. In other words, this statement can be expressed as, or Kepler's second law of planetary motion can be stated alternately as aerial velocity of a planet around the sun is constant. That is, in mathematical form, we can write it dA by dt. dA is the area covered by a planet revolving around the sun in an elliptical orbit in a small time interval dt. Therefore, dA by dt, rate of change of area upon time, that is rate of change of area. dA by dt is equal to constant. ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम के रूप में एक्सप्रेस किया जाए इस लॉ को. So Kepler's second law of motion can be explained as a consequence of conservation of angular momentum under a central force.
and under a central force, angular momentum of a planet around the sun remains constant. So dA by dt, rate of change of area, that is areal velocity. dA by dt is the areal velocity, rate of change of area is equal to constant. इस constant को लिखा जा सकता है under a central force angular momentum L by 2m, और because under a central force planet of motion of a planet around the sun in an elliptical orbit is directed towards the sun. So it is a central force, because this force is directed towards this force acting on a planet around the sun is directed towards the sun along the line joining the planet to the sun along the line PS. So it is a central force. Gravitational force acting on a planet around towards the sun is a central force, and under the motion motion of an object here planet under the action of a central force remains constant. So angular momentum of the planet around the sun is also constant, because it is also under the action of a central force. So dA by dt in mathematical form, dA by dt is equal to constant, is equal to L by 2m, and this is constant, where L is the angular momentum of the planet around the sun. And since the planet revolves around the sun under the action of a central force is the force which acts along the line joining two particles. Here one particle is one mass is sun, and other mass is other object is planet, and this gravitational force acting on the planet towards the sun is along the line joining the planet to the sun. So it is a central force. Now explanation and mathematical proof of Kepler's second law of planetary motion. The statement of Kepler's second law is the line joining any planet, say P, to the sun, say S, sweeps out equal areas in equal टाइम इंटरवल्स. समान समय अंतराल में इक्वल टाइम इंटरवल्स सपोज करते हैं तो स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt है, तो उसमें जो एरिया कवर किया जाएगा प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने वाला लाइन, सपोज करते हैं प्लैनेट किसी समय पोजीशन ए पर है, इलिप्स के पॉइंट ए पर है, तो सन से प्लैनेट को ज्वाइन करने वाला लाइन ए से और ए एस, ये स्मॉल dt टाइम में मान लिया कि प्लैनेट इलिप्स के बी पॉइंट पर पहुंच गया, मूव कर गया, ए से बी पर मूव कर गया dt टाइम इंटरवल में, स्मॉल टाइम इंटरवल dt में, और किसी समय t पर पोजीशन था प्लैनेट का ए पर, इलिप्स के ए पॉइंट पर, जहाँ उसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है, मतलब सन से प्लैनेट का, जब प्लैनेट ए पर है, ए पॉइंट पर है इलिप्स के, तब उसका डिस्टेंस r हो गया, और इसका इस ए से इसको ज्वाइन करने वाला लाइन का इंक्लिनेशन ये मेजर एक्सिस है, इलिप्स के मेजर एक्सिस, ये मेजर हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेजर एक्सिस है, सपोज करते हैं ये एक्स एक्स डैश है, ये मेजर एक्सिस इलिप्स का है, तो इलिप्स के मेजर एक्सिस से सन और प्लैनेट को सन से ज्वाइन करने वाला लाइन एस का इंक्लिनेशन थीटा है किसी समय टी पर, एट एनी इंस्टेंट टी पोजीशन ऑफ द प्लैनेट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इलिप्स इज एट पॉइंट ए, and after very small time interval dt, the planet moves to new position b of the planet. So area covered by the planet here is a curved angle SAB. Area of the curved angle is 1/2 half 1/2 base into height. So base is SA and height means this distance AB, which is r d theta, because this angle is d theta. D theta is the angle swept angle formed by the line joining planet to the sun AS in a small time dt when the planet moves to new position B of the ellipse. So d theta is the angle formed when the planet moves to new position B from position A. So area swept out by the line joining the planet to the sun AS
in time interval dt is triangle SAB. The area of this triangle will equal to the area of another triangle SCD, which is formed in equal time interval. Means in equal time interval dt, the planet moves from any position C of the ellipse to new position D. So area of, according to Kepler's second law, area of this triangle SAB must be equal to area of SCD, curved triangle SCD, because both triangles are formed due to movement of the planet from initially from point A to point B, and in this case point C to point D in equal time interval dt, which is very small. So area, according to Kepler's second law, area of triangle curved triangle SAB and SCD must be equal according to Kepler's second law. So according to Kepler's second law, we have area of curved triangle SAB equals to area of curved triangle SCD, because both are formed in time interval very small time interval dt, when the planet moves from position A to position B of the ellipse, and in this case when from position C to D, but in equal time interval dt. So aerial velocity of the planet swept out equal area in equal time interval. Therefore, area of triangle SAB is equal to area of triangle SCD. Area of triangle curved triangle SCD. तो सेकेंड लॉ एक्सप्लेन हो गया उसका स्टेटमेंट, और मैथमेटिकली अब इसको प्रूव कर सकते हैं. मैथमेटिकल फॉर्म डी ए बाई डी टी इक्वल टू एल बाई टू एम, विच इज कॉन्स्टेंट. एल इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट. तो नाउ एरिया कवर्ड बाई this line joining the planet to the sun, area swept out by the line joining the planet, position of the planet here at any time t is A, and in a small time dt it moves to position B. Planet moves to position B. So area swept out the line joining the planet to the sun, SA is triangle SAB. Area of triangle, swept out by line SA, by the line joining, that is line joining planet to the sun by SA, which is line joining planet to the sun. S is the position of sun, A is the position of the planet at any instant, at any time t. And after time interval dt, the planet moves to new position B of the planet, and so angle formed at S edge by this line SA, when its position changes to position of the planet changes to position B, angle formed SBSA is equal to d theta in time dt. So area swept out by the line joining planet to the sun, SA in time dt, a small time interval dt, a small time interval dt is area हो गया, that is area of triangle is equal to area of curved triangle SAB, area of curved triangle SAB, and area of triangle we know 1 by 2 base, that is SA, into height, that is AB, is equal to 1 by 2. SA is the distance of the planet from the sun, which is r, and AB is r d theta, equals to 1 by 2 r into r square d theta. Now aerial velocity, ये तो एरिया हो गया dA, this is area. Now aerial velocity of the planet, because this area is swept by the line joining the sun to the planet SA in time interval, a small time interval dt. So aerial velocity और एरियल स्पीड dA अपॉन dt. एरियल स्पीड पहले निकाल लेंगे और वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो एरियल वेलोसिटी हो जाएगा. एरियल स्पीड हो गया dA अपॉन dt
डी ए अपॉन डी टी, वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी, एंड डी थीटा बाई डी टी इज वी नो एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ स्मॉल टाइम डी टी में जब इलिप्स के पॉइंट ए से प्लैनेट पी पर पहुँचा है तो जो एंगल फॉर्म हुआ है ऐसे के द्वारा जो एंगल फॉर्म हुआ है वह सन पर वह डी थीटा है। देयरफॉर डी थीटा बाई डी टी इज द rate of change of angular displacement, which is called angular velocity. So d theta by dt is angular velocity. Therefore dA has areal speed is dA by dt is equal to 1/2 r square d theta by dt is ओमेगा। अब ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देता है जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में आ जाए, और 1/2 m r स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन m, and that is mr square by 2m into omega, and mr square is moment of inertia, mass, m is the mass of the planet around the sun. तो moment of inertia of the planet around the sun, तो mr square is I by I into omega 1/2, नीचे में 1/2m है, 1/2m I into omega, and I into omega is mr square is moment of inertia of the planet around the sun. तो I into omega is angular momentum which is equal to L/2m. वेक्टर फॉर्म में आप लिख देता है L/2m, तो एरियल वेलोसिटी हो जाएगा, एरियल स्पीड था dA by dt, अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एरियल वेलोसिटी हो जाएगा I ओमेगा इज इक्वल टू L। और अंडर जैसा कि मैंने पहले बतलाया, अंडर द motion of here the motion of the planet around the sun is under the action of central force, because this force is acted towards the fixed point, a fixed point S along the line joining planet to the sun. This is the definition of central force. So under the central force angular velocity L is equal to I omega is the angular velocity, angular momentum of the planet, where I omega is equal to L, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट, जिसका सिंबल होता है एल वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट angular momentum of the planet, and this is denoted by the symbol L vector, because angular momentum is a vector quantity. So dA by dt, therefore aerial velocity, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, एरियल स्पीड था dA by dt, एरो नहीं यूज किए थे, एरियल वेलोसिटी dA वेक्टर बाई dt इक्वल टू L/2m, L एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है सेंट्रल फोर्स के लिए, 2m, L/m, L भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, इसे h/2 लिखा जा सकता है, h इज L/m विच इज कांस्टेंट, h/2 इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के अंदर जब मोशन होगा, प्लैनेट का मोशन यहाँ सेंट्रल फोर्स के अंदर है, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट. So dA by dt is constant, which is the mathematical proof of Kepler's second law. Now Kepler's third law of planetary motion, and the statement of Kepler's third law is the square of time period of revolution of a planet around the sun, that is T square, capital T square, is directly proportional to the semi-major cube of semi-major axis of the ellipse that traced by the planet around the sun. That is mathematically T square directly proportional to AQ. So the square of, write down it, the square of time period of revolution, that is capital T square, चूँकि time period of revolution is the time taken by the planet to complete one revolution on the ellipse around the sun. Sun being at the one of the focus, position of the sun is here, which is one of the focus of the ellipse. So time period of revolution, the square of time period of revolution of a planet around the sun on the elliptical orbit, that is capital T square,
टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का सिंबल टी है, उसका स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। थर्ड लॉ केपलर का कहता है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज कैपिटल टी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, उसका स्क्वायर होगा तो टी स्क्वायर इज दैट ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द, क्यूब का मतलब पावर 3 ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स दैट इज ए क्यू। सेमी मेजर एक्सिस ये हो गया, इलिप्स के सेंटर से, इलिप्स के सेंटर से ये डिस्टेंस x का डिस्टेंस या x डैश, उससे सेंटर से x डैश का डिस्टेंस या सेंटर से x का डिस्टेंस जो इसके सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पर है, ये हॉरिजेंटल एक्सिस है x डैश, इसी को इसको मेजर एक्सिस कहा जाता है, जिसका लेंथ इलिप्स का मेजर एक्सिस का x डैश 2a होगा। तो सेमी मेजर एक्सिस का जो लेंथ है x डैश 2 है उसका हाफ हो गया। हाफ का मतलब सेंटर से x का डिस्टेंस या सेंटर से x डैश का डिस्टेंस। तो ये सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि सेंटर, इलिप्स के सेंटर से इसका जो x पॉइंट है इसका x एक्सिस पर, मतलब हॉरिजेंटल जो एक्सिस है x डैश इलिप्स का, तो सेंटर से हॉरिजेंटल एक्सिस यानी एक एक्सट्रीम जो सर्कमफ्रेंस पर है और दूसरा एक्सट्रीम इसका x डैश है, तो सेंटर से x तक का जो डिस्टेंस होगा इसको सेमी मेजर एक्सिस कहा जाता है। क्योंकि मेजर एक्सिस का जो लेंथ है इलिप्स का x डैश इक्वल टू 2a होगा, 2a होता है, तो 2a का आधा सेमी मेजर एक्सिस से हो गया। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन in an elliptical orbit is a square of time period of revolution of a planet around the sun, that is t square, is directly proportional to the cube power of the semi major axis of the ellipse, and this is Kepler's third law। तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है, that is t square, कैपिटल t square, which is the square of the time period of revolution। मतलब टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन प्लैनेट का क्या हो गया कि सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम इलैप्स हुआ, टाइम टेकन, उसका स्क्वायर हो गया, उसे टाइम पीरियड कहा जाता है ऑफ रिवॉल्यूशन। उसका स्क्वायर, केपलर थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज टी स्क्वायर ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स दैट इज ए क्यू, एंड दैट इलिप्टिकल पाथ इज ट्रेस्ड आउट बाय द, कैसे ट्रेस किया गया है इलिप्टिकल पाथ, किसके द्वारा, प्लैनेट के द्वारा, अराउंड द सन, दैट इज टी स्क्वायर directly proportional to AQ, and this is the mathematical form of Kepler's third law, and which is also called law of periods, law of time periods or law of periods। अब इसे Kepler where A is the semi major axis of the ellipse, where A is the semi major axis of the ellipse, और यहाँ जो B है ये सेमी माइनर एक्सिस है, ये वर्टिकल जो डायमीटर है इसका इलिप्स का वर्टिकल डायमीटर वाई बाई डैश और जेंटल डायरेक्शन एक्स डैश को मेजर एक्सिस कहा जाता है, जिसका लेंथ 2a है, और सेमी मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस ओ एक्स या ओ एक्स डैश जो कि स्मॉल ए है, उसी ढंग से ओ से वाई का डिस्टेंस जो वर्टिकल डायमीटर का आधा हो गया वाई बाई डैश 2b, उसका हाफ हो गया b। ये सेमी मेजर एक्सिस इलिप्स का हो गया स्मॉल ए, और b द सेमी माइनर एक्सिस। और ये डिस्टेंस जो कॉर्ड है इसका सेंटर सन से, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है सर्कमफ्रेंस के इस पॉइंट पर, प्लैनेट का पोजीशन जब यहाँ होगा तो सन के ठीक एकदम वर्टिकल होगा, तो ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड पूरा होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, तो कॉर्ड का जो आधा होगा उसको सेमी लेटस रेक्टम कहा जाता है। दिस इज सेमी लेटस रेक्टम। यहाँ पर इलिप्स का पोजीशन हो सकता है किसी समय प्लैनेट का, जब ठीक वर्टिकल पोजीशन में होगा सन से, तो ये एस से पी का डिस्टेंस सेमी लेटस रेक्टम कहलाता है, जिसको स्मॉल एल सिंबल से डिनोट किया जाता है। वेर ए हो गया सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, मेजर एक्सिस का हाफ सेमी मेजर एक्सिस। अब इसको प्रूफ किया जा सकता है, मैथमेटिकल प्रूफ इसका केपलर थर्ड लॉ का, दैट इज टी स्क्वायर इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। इसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 11th का जो टेस्ट एग्ज़ाम होता है इंटरनल, उसमें इसको ये टी स्क्वायर वेरीज एज ए क्यू, या बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी, मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट में भी इसे पूछा जाता है। नाउ इसका मैथमेटिकल प्रूफ, तो टाइम पीरियड जो होगा ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी स्पीड। Here distance is covered by the here
here distance covered by the planet around the sun is in terms of area. तो और एरिया कवर्ड बाय द एरिया ऑफ द इलिप्स, चूँकि जो प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ पर मोशन कर रहा है, तो जो एरिया कवर करेगा, एरिया कवर्ड बाय द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द प्लैनेट अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट इज द एरिया ऑफ द इलिप्स इज पाई ए बी. तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द इलिप्स टाइम पीरियड टी इजकल टू एरिया ऑफ द इलिप्स. यहाँ डिस्टेंस जो है एरिया के रूप में है, एरिया कवर कर रहा है, ट्रेवर्स कर रहा है प्लैनेट सन के राउंड इलिप्स पर अपॉन वेलोसिटी इज एरियल वेलोसिटी. क्योंकि रेट एरिया अगर कवर कर रहा है तो एरिया से रिलेटेड जो वेलोसिटी होगा एरियल वेलोसिटी डी ए बाई डी टी, और एरिया ऑफ द इलिप्स होता है पाई ए बी एंड एरियल वेलोसिटी इज एल बाई टू एम. अभी हमने निकाला था डी ए बाई डी टी सेकेंड लॉ में, डी ए बाई डी टी एल बाई टू एम. एल कॉन्स्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम है, एल बाई टू एम, एल अपॉन टू एम. इसका मैग्नीट्यूड हो गया एरियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एल बाई टू एम. एल वेक्टर है, मॉड ले लिए एल बाई टू एल. नाउ दिस इक्वल टू पाई ए बी अपॉन मल्टीप्लाइड बाई टू एम, ऊपर चला जाएगा, एरियल वेलोसिटी की जगह है एल बाई टू एम बाई एल. अब चूँकि यहाँ पर जो केपलर थर्ड लॉ है वो टी स्क्वायर वेरीज एज ए क्यू है, तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको 1 मान लें. ये टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट है अराउंड द सन. सन के अराउंड प्लेनेट का घूर्णन का परिभ्रमण का आवर्तकाल, घूमने का आवर्तकाल, परिभ्रमण का आवर्तकाल कहा जाएगा. तो ऑन स्क्वायरिंग वी गेट ऑन squaring on both sides, we get a squaring on both sides of equation 1 here, of equation number 1. In this case we get now squaring both sides of equation 1 we get in the proof of Kepler's third law of planetary motion. Equation 1 is here t is equal to then t square equals to squaring on RHS we have 2m that is 4m, 2m square that is 4m square, pi square, a square, b square, where a is the semi major axis and b small b is the semi minor axis. सेमी माइनर एक्सिस इलिप्स के सेंटर से जो वर्टिकल डायमीटर है उसका हाफ डिस्टेंस ओ आई या ओ आई डैश हो गया बी. तो बी इज द सेमी माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, ए इज द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स अपॉन एल स्क्वायर. एल इज द एंगुलर मोमेंटम एल स्क्वायर. नाउ सेमी लेटस रेक्टम, दिस डिस्टेंस एस पी, वर्टिकल distance of the position of any point P on the circumference or position of the planet from the sun, vertical distance. तो ये डिस्टेंस L हो गया सेमी लेटस रेक्टम. जो यहाँ से ये कॉर्ड होता P से, इसको ये कॉर्ड सन से पास करने वाला ये कॉर्ड होता सर्कमफ्रेंस के इलिप्स के सर्कमफ्रेंस के दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला. तो इसका हाफ डिस्टेंस हो गया. ये वर्टिकल डिस्टेंस से P का ये सेमी लेटस रेक्टम कहलाता है, स्मॉल एल, जिसका सिंबल. तो नाउ वी हैव सिंस L इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम L, सेमी लेटस रेक्टम L, सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स. यहाँ इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है. सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स L, ellipse L is equal to b square upon a. Therefore, b square is equal to L into a. b square is equal to a into L. Semi latus rectum ellipse का फॉर्मूला L is equal to b square by L, b square upon a small a. Therefore, b square is equal to small a into L. L is the semi latus rectum. तो यहाँ पर b square की जगह a into L लिखा जा सकता है. Is equal to 4m square
4 पाई स्क्वायर पहले लिख दें, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर की जगह ए इंटू एल. L is the semi-lattice sectum of the ellipse, which is this vertical distance SP. S is the position of the sun and P is the position of the planet at an instant when the planet is just above the sun. This vertical distance is called semi-lattice rectum. पॉइंट S से P को ज्वाइन करने वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये है SP is equal to called semi-lattice rectum. Semi-lattice rectum upon L square. This is equal to 4 pi square m square. M is the mass of the planet which is revolving around the sun in an elliptical orbit. M square L constant ही है. AQ अलग कर लेते हैं, ए स्क्वायर इंटू AQ बाई एल स्क्वायर, और ये सब कांस्टेंट है. 4 पाई स्क्वायर एम एल सेमी लेटेस्ट सेक्टम, और एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है जैसा कि मैंने बताया सेंट्रल फोर्स के अधीन, क्योंकि यहाँ पर मोशन ऑफ द प्लैनेट around the sun is under the action of central force. So in central force angular momentum L of the object or particle, here object is planet, so under the action of central force angular momentum of the planet also remains constant. तो ये सभी टर्म कांस्टेंट है. इस कांस्टेंट को k हम सपोज कर लेते हैं, k इंटू AQ. ये सभी कांस्टेंट हो गया, इसलिए k उसको सपोज कर लिए. देयरफॉर रिजल्ट आ गया टी स्क्वायर, और k को इन्वॉल्व कर देंगे प्रोपोर्शनल साइन में, तो टी स्क्वायर वेरीज एज AQ. सो दस दिस इज प्रूव्ड. दिस इज थर्ड लॉ ऑफ Kepler's third law of planetary motion, that is a square of time period of revolution of the planet around the sun t square directly proportional to the cube of the semi major axis. एक डेरिवेशन एग्जामिनेशंस में 11th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में 11th का जो इंटरनल बोर्ड्स है, डिफरेंट बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स या CBSE बोर्ड्स, तो उसका जो इंटरनल टेस्ट होगा स्कूल का, उसमें पूछा जा सकता है टी स्क्वायर वेरी एज A to the power Q. और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है. Thank you very much.